Anchoring on the 15th of August. Program list. 1. Flag hoisting ceremony. 2. Goddess Saraswati garlanding and prayer. 3. Welcome song. 4. Welcome speech by Manager Sir. 5. Dance on ए देश मेरे. 6. Dance on देश रंगीला. 7. Speech by Honorable Chief Guest. 8. Dance on तेरी मिट्टी में मिल जवा. 9. Patriotic song. 10. Speech in English. 11. Dance on जिस देश में गंगा रहता है. 12. Speech in हिंदी. 13. Dance on भारत की बेटी. 14. Patriotic song. 15. Dance on संदेशे आते हैं. 16. Concluding speech by Manager Sir. 1. Flag hoisting ceremony. आज़ादी के इस उत्सव में मैं सबका स्वागत करता हूँ. समाउंट ग्लोबल के प्रांगण में दिल से अभिनंदन करता हूँ. आए हुए मुख्य अतिथि हमारे आदर्श हैं हम सब के लिए. कोटि कोटि आभार आपका, धन्यवाद मैं करता हूँ. पूजनीय है अध्यापकगण, अतिथि देवो भव अभिवाहक. शीश झुकाकर मैं सबका स्वागत और वंदन करता हूँ. Honorable Chief Guest, revered Manager Sir, respected principals and teachers, galaxy of intellectuals, our parents and my dear students. First of all, on behalf of school management, teachers and staff, I welcome you all in Samount Global School on the auspicious occasion of our 79th Independence Day. Need not to tell that this is the day our country India got freedom from the slavery of Britishers. Our freedom fighters left no stone unturned to make our country independent. They kept striving and fighting against British Army with their limited resources and made the public aware about their rights, as most of Indian population was illiterate that time and they had only the thinking of their bread and butter and nothing to do with nation. In fact, they were unaware of the nationalism concept. Their country was the place they live in, just like a frog in the well. Our intellectual freedom fighters educated them and instigated to be unite and fight for independence. Consequently, our country got freedom on the 15th of August 1947. Dear audience, this is all because of our real heroes of our nation, our freedom fighters who sacrificed their lives for our country. So before we start the program, let's have a brief of Indian independence movement. Actually, our country India was called the bird of gold. That time, our culture was so enriched and the people were so prosperous. Our country exported so precious spices, cotton, silk, ivory etc. to foreign countries and in return earned so much gold and money. This was the attraction of foreigners and they fascinated towards India and wanted to trade, so as a result many foreigners like Portuguese, Dutch, British and French came to India for trade. They started fighting to one another and ultimately after the Vandivash War 1760 the Britishers defeated the French and remained all alone in India for trade. They used divide and rule policy and won some kingdoms in India after Plassey War 1757 and Baghjur War 1764. They oppressed the Indian and exploited the money from India. But gradually our freedom fighters made the people aware and then came the revolution of 1857, although it failed due to many reasons, but it was the beginning to raise the voice against Britishers. Then after a series of many agitation and revolts we got freedom on the 15th of August 1947. So let's remember our freedom fighters with this beautiful poem. धन्य है भारत भूमि जहाँ पर भगत सिंह ने जन्म लिया. फांसी जिसने स्वीकार कर हंसते हंसते गले लिया. रोशनलाल, अशफाक व बिस्मिल को भी जिसने साथ लिया. और लिया बदला जिसने काकोरी जैसा कांड किया. धन्य है भारत भूमि जहाँ पर भगत सिंह ने जन्म लिया. Well, it's time to start the program as our chief guest has stepped in our school premises, so I request manager and principal sir to welcome him. I request all of you to please stand at your place and give him a warm welcome with your loud round of applause. Thank you everyone. Thank you honorable chief guest for giving your valuable time with us. Despite your hectic schedule, I request manager sir to please welcome our chief guest by garlanding him and giving him badge and memorandum.
Now it's time to hoist our national flag, so I request Sir to give the commands to students and get ready for national anthem. Now I would like to request our chief guest to please come in front and unfurl the national flag. Attention! Stand at ease. Attention! Get ready for national anthem. जन गण मन। 2. सरस्वती प्रिया। किसी भी कार्य की शुरुआत हम भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं और इस ज्ञान के मंदिर में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट टू प्लीज लाइट अप द लैम्प बिफोर माँ सरस्वती एंड ऑफर द फ्लावर्स एंड गार्लैंड। ओम अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युमामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। Now the students come forward to perform the prayer of Ma Saraswati. Everybody please sit at your place and let's enjoy the celebration. 3. Welcome song. So as we know अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवतुल्य होते हैं और उनका स्वागत सत्कार करना हमारा अहोभाग्य व नैतिक कर्तव्य है. It's a moral duty to welcome our guests, so I would like to call upon students to please perform the welcome song. Awesome. Big hands for these kids. आज़ादी की इस बेला पर आओ शपथ हम खाते हैं, ध्यान रखेंगे माँ बाप का, साथ बैठ मिल खाते हैं। नफरत के बाजार को अब हम प्यार की लौ से जलाते हैं। जाति, धर्म, भाषा की दीवार को सब मिल साथ ढहाते हैं। करके मेहनत दिन रात हम बेरोजगारी भगाते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को आर्थिक आज़ादी लाते हैं। जय हिंद जय भारत। 4. Welcome speech by manager sir. Well, now you all are eagerly waiting for the program, but before that I would like to invite our manager sir to please welcome our guests and bless us to start the program. 5. Dance on A Desh Mere. Well, our army is our pride because when we sleep inside the home, they wake up to defend us on the border. फौज हमारे देश की शान है, फौज हमारी आन है, फौज है तो हम हैं। और ऐसी ही थीम पर एक देशभक्तिपूर्ण गाना है, ए देश मेरे, जिस पर क्लास 3 और 4 के बच्चे आपके बीच डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो प्लीज वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd and 4th with loud round of applause. Well done, what a scintillating performance was this. 6. डांस ऑन देश रंगीला। भारत देश है सबसे न्यारा, सबसे अच्छा सबसे प्यारा, अनेकता में एकता का उदाहरण है देश हमारा। And our next program is a heart-touching dance performance on Desh Rangila. So I would like to call upon the students to please come on the stage. Wow, what a fantastic performance. Give a big round of applause for these children. 7. Speech by Honorable Chief Guest. Well, as our chief guest has to attend some more programs, so I would like to request Honorable Chief Guest to please come on the stage and shower his blessings upon us. 8. Dance on तेरी मिट्टी में मिल जवा, दूर जाके अब जाना, शहरों की चकाचौंध में याद आती है मुझे गांव की सोंधी खुशबू। हमारे दिल, हमारी आत्मा में, हमारे जेहन में हमारा देश है और हमारे देश की मिट्टी हमारी माँ है जो हमें पालती पोसती है। इस मिट्टी की याद लिए हमारे बीच क्लास के बच्चे आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस ऑन तेरी मिट्टी में मिल जावा। सो प्लीज वेलकम द स्टूडेंट्स। हाउ कैप्टिवेटिंग वाज दिस परफॉर्म। वाओ, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज किड्स। नो पेट्रियोटिक सॉन्ग। Well, our country is a land of braves, and the time our country needed the blood, our heroes never got back, and whatever we have today or whosoever we are today, it's all because of our freedom fighters. So crediting to our real heroes. Our next program is a patriotic song, so I invite students to please come on the stage and sing the patriotic song. Well done, incredible performance. Give a big round of applause for this song and singers. Thus, speech in English. Well, there is a proverb, stage speaker can't be beggar, because one who speaks on stage gets confidence, and we know that confidence is the key to success. So our next performance is a speech in English. Please welcome to please come on the stage. Wow, so beautiful. Smiling face stunning. Mind blowing. Big hands for 11. Dance on जिस देश में गंगा रहता है।
Well, our country is agricultural county and most of the population is still living in villages. Villages are very peaceful and hygienic for living, and those who once lived in village, if go abroad or in metros, they realize that villages are better place to live. वो रिमझिम सी बारिश में खेतों का लहलहाना, वो आम के बगीचों में चिड़ियों का चहचहाना, बरबस खींच लेता है मुझे गाँवों की तरफ। और अब आपको खींचने यानी आपके ध्यान को खींचने के लिए आ रहे हैं हमारे चार्मिंग चैंपियंस ऑफ क्लास विद अ डांस परफॉर्मेंस ऑन जिस देश में गंगा रहता है। सो प्लीज वेलकम दीज किड्स विद योर क्लिपिंग्स। फंटास्टिक, फैब्यूलस, फैंटाबुलस, माइंड ब्लोइंग। गिव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉस फॉर आवर चार्मिंग चैंपियंस। 12. Speech in Hindi. Well, as I said before, that stage performance enables the students to have more confidence and leadership capacity, and it's very important to be successful in life. And keeping in view the same, our next performer is going to deliver a speech in Hindi, so please welcome to come on the stage. Fascinating, dashing performance. Give a huge clippings for this performance. 13. Dance on भारत की बेटी। बेटियां हमारे देश की शान है, हमारे परिवार की सम्मान है, पिता का स्वाभिमान है और आज हर क्षेत्र में अपने देश का परचम लहरा रही हैं। हमारे देश में इस समय सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। Keeping in view the same, our next program is devoted to our daughters of nation, Bharat Ki Beti, a dance performance, so I request students to please come on the stage. Wow, it's really a heart-touching dance performance. Stunning, incredible. Please give a big round of applause for these daughters. 14. Patriotic song. Well, now it's time to remember our freedom fighters who strived for the freedom of our country. So our next program is a song devoted to our real heroes of our nation. So I would like to call upon to please come on the stage. Awesome, mesmerizing performance. Big hands for these kids. 15. डांस ऑन संदेशे आते हैं। हाथ में बंदूक, निगाहें सरहद पर, रात हो या दिन वो रखवाली करते हैं। याद आती है उनको भी अपने घरों की, लेकिन दिल पर पत्थर रख वो देश को कुर्बानी देते हैं। हमारे देश के वीर जवान दिन हो रात, कपकपाती सर्दी हो या भीषण बरसात, चाहे हो झुलसाने वाली गर्मी या हो वज्रपात, सरहद पर तैनात होकर हमारे देश की रखवाली करते हैं। हम सोते हैं तो वो जागते हैं, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को मारकर वे देश की पहरेदारी करते हैं ताकि हम आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। Salute to our army, salute to our army men. And our next program is dedicated to our army. A thrilling dance performance on Sandeshe Aate Hain. What a scintillating performance was this. Please give a big round of applause for this mind-blowing performance. 16. Concluding speech and smile thanksgiving by Manager Sir. Well, it's a concluding session, so I invite respected Principal Manager Sir to please come on the stage and shower his blessing upon us.